Good morning. Welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. Coelom, another fundamental character, basis of classification is a coelom. So, let us see that what is this coelom and what happens here. Okay, so इसमें भी coelom formation थोड़ा सा books में नहीं है. That is also we are going to discuss that. Now, first of all, what is coelom? Presence or absence of a cavity between between which one body wall and gut wall. ये body wall बोले तो कौन सा आते बेटा? body wall बोले तो ectoderm ले सकते हम, ectoderm, and ये gut wall बोले तो कौन सा? endoderm. So primitive definition है तो यही हो सकते. A cavity in between the ectoderm endoderm is very important for classification. ये very important. So statement वैसा दे सकते. So नहीं तो direct question also. So which is very important for the classification of animals बोले तो that is a cavity present in between the body wall and gut wall. That is nothing but coelom only. So the body cavity which is lined by the mesoderm. इधर थोड़ा सा differentiate किया. इधर simple definition in the lower classes. That is ये endoderm है, ये ectoderm है, इन दोनों के बीच में कैविटी है, that is called as a body cavity. लोअर क्लासेस में हमको ऐसे डिफाइन करते हैं, बट इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन. बट अभी नीट लेवल में हायर क्लासेस में डेफिनेशन है. सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर्स इज कॉल्ड एज अ सीलोम. इधर कैसे होते हैं? सो दिस इज लेट अस सी दिस वन. ये एंडोडर्म है बेटा, बाद में ये एक्टोडर्म हो जाएगा. ये एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी होते, और एक बार ड्रा कर लेंगे इसको. इधर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इन दोनों के बीच में जो कैविटी होते. सो दिस इज हियर मेसोडर्मल लेयर. ये मेसोडर्मल लेयर है. पहले तो एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसके बीच में अभी मेंशन किया the cavity present in between the mesodermal layers. So ये navy blue है ना, ये navy blue is a mesodermal layers. ये mesodermal layers के बीच में जो cavity है that is only called as a coelom. This is coelom, original coelom का definition है. ये complete definition है. Previously ectoderm, endoderm. So that is not a original cavity. Maybe sometimes it is a false cavity also. Okay, but original cavity coelom बोले तो ये ectoderm है. एंड दिस इज एंडोडर्म. ये रेड कलर वाला जो है ना, रेड कलर वाला, दिस इज ओनली मेसोडर्म. ये मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है दैट इज नथिंग बट द कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन और द कैविटी गार्डेड बाय द कैविटी covered by the mesodermal layers. Then that cavity is known as the original coelom or body cavity बोलते हैं इधर. Okay, so the cavity present in between the mesodermal layers is called as a coelom body cavity. This is also very important for the classification of animals. Okay, इधर statements के लिए ज़्यादा important है. First point. Now let us see that next. A body cavity based on the presence or absence and how it is formed, organisms are categorized in three types. One is acoelomates, pseudocoelomates and eucoelomates. Eucoelomates में फिर भी cyzocoelom and enterocoelomates are present. Okay, so here the animals in which the body cavity is absent. Body cavity absent होने तो then those are called as which one? Acoelomates बोलते. The organisms in which body cavity is absent, then cavity is totally filled with. ये ectoderm है, endoderm है. ये दोनों के बीच में ये पूरा पिंक कलर वाला जो है ना, so that is filled with tissues. That is called as actually original coelom का location है. So वो इधर पूरा filled with connective tissue, then it is called as, means there is no gap in between the ectoderm and endoderm. Endoderm के बीच में cavity नहीं होते. Mesodermal organs are present and those are present along with the other tissues. ये दोनों के बीच में जो gap है ना, वो gap totally filled with which one? Parenchyma. Okay, so then it is known as acoelomates. Cavity is totally absent. It is filled with organs and tissues. Example, either platyhelminthes mention किया. Not only platyhelminthes, even cnidarians, ctenophorans, platyhelminthes. In some books they mention that poriferans also.
ओके क्योंकि उधर भी कैविटी में फिल्ड विथ अदर कनेक्टिव टिश्यूज इट इज. सो दिस इज एसिलोमेट्स means cavity is absent filled with the connective tissues. Next and the second variety is which one? Pseudocoelom beta. This is pseudocoelom. Pseudo बोले तो क्या है? Pseudo means which one? False or fake. This is not original. Original बोले तो क्या है? Original हमको पता है. That is cavity present in between the mesodermal layers. That is original. But here cavity प्रेजेंट इन बिटवीन, इधर देखो ये डायग्राम में देखने तो ये सूडोसिलोम मेंशन किया, लेकिन कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन विच वन? देयर इट इज. ये डायग्राम में ये एक्टोडर्माई, ये मेसोडर्माई, ये एंडोडर्माई. कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन विच वन? एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सो ये गलत है, इट इज नॉट ओरिजिनल सीलोम, इसलिए इसको बोलते सूडोसीलोम. इधर देखने तो ये डायग्राम में ये कौन सा? एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म. एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म विल बी अरेंज्ड एज ए स्कैटर्ड एज ए पाउचेस. ये पाउचेस के बाहर जो है ना, पाउचेस के बाहर जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ सूडोसीलोम. ओरिजिनल सीलोम क्या है? ये पाउचेस नहीं है, कंटिन्यूअसली दे बिकम्स लाइक अ लेयर्स. वो लेयर्स के बीच में कैविटी है तो दैट इज ओरिजिनल कैविटी. हियर इट इज नॉट इन बिटवीन द मेसोडर्मल लेयर्स, आउटसाइड ऑफ द मेसोडर्मल पाउचेस. इधर है तो इन बिटवीन द एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. इसलिए ओरिजिनली ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होते इधर, इसलिए इसको बोलते सूडोसीलोम, नॉट ओरिजिनल सीलोम. Means coelom body cavity is not lined by mesodermal layers, then that is called as a pseudocoelom. Either Ascaleminthis, nematoda, roundworms is belongs to this category. Okay, next one original coelom है. इधर देखने तो ectoderm and this is endoderm. ये दोनों के बीच में कौन सा? मेसोडर्म. ये देखो ये मेसोडर्मल लेयर, ये मेसोडर्मल लेयर. ये आउटर मेसोडर्मल लेयर को बोलते पैराइटल पेरिटोनियम. पैराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बोले तो that is nothing but mesodermal layer only, parietal peritoneum, and inner one is called as which one? Visceral peritoneum beta. विजरा बोले तो इंटरनल आर्गन्स. विजरल लेयर, इंटरनल आर्गन्स को सराउंड करके पैक करके ये लेयर होते. विजरा, विजरल लेयर, लेयर. सो इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ ओरिजिनल सीलोम. ओरिजिनल सीलोम. ओके, सो दिस इज हियर. ये कैविटी जो है ना दैट इज ओनली ओरिजिनल सीलोम. इधर दिस इज and this is totally. So that cavity which is lined by, guarded by mesodermal layers, that is called as a original coelom or eucoelom बोलते. So examples: Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and chordates. So these all are contains this eucoelom, but इधर भी थोड़ा सा difference है. क्या है? Annelida, Arthropoda, Mollusca, इसमें Schizophyllum and remaining organisms and remaining phylums में that is called as a enterocoelom. enterocoelom बोलते हैं. ओके, मीन्स इसका ऑरिजिन, सीलोम को ऑरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते. सो अभी पॉसिबल है तो उसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो कैसे? ओनली यूसीलोम फॉर्मेशन. सो रिमेनिंग एसीलोम एंड नेक्स्ट वन सूडोसीलोम हमको पता है, लेकिन यूसीलोम में 2 वेराइटीज है ना, वो कैसे फॉर्म होगा हमको पता है. तो पॉसिबल है तो सूडोसीलोम का एंड एसीलोम का भी डिस्कस कर लेंगे. लेट अस सी दैट. नेक्स्ट वन, दिस इज ओवरऑल कंपैरिजन बेटा. ये स्लाइड में ले लिया, हमको इजीली पता चलेगा. सो एसिलोमेट्स बोले तो नो सीलोम, सूडोसीलोमेट, फॉल्स सीलोम, ट्रू सीलोम, दैट इज यूसीलोम, ट्रू सीलोम, ओरिजिनल सीलोम इज प्रेजेंट. सो एसिलोमेट्स में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में so which one? टिश्यू इज प्रेजेंट. इधर रेड कलर का. सो टिश्यू और मेसोडर्म से वो फिल हो गया, दो देयर इज नो कैविटी. सो देन दोज आर नोन एज एसिलोमेट्स. इधर मेंशन किया स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी फिल्ड विथ पैरेन्काइमा, कनेक्टिव टिश्यू. देन एग्जांपल्स इधर मेंशन किया पोरिफेरा से
platyhelminthes तक. Okay, but in some books, even according to NCERT also, it may not diploblastic. Okay, porifera को consider करने का जरूरत नहीं है. So we can take that Cnidaria, Ctenophora and platyhelminthes. Next one, pseudocoelomates. Pseudocoelomates बोले तो in between ectoderm and endoderm, mesoderm arranged as which one pouches जैसा होते. Mesoderm arranged as a pouches. ये pouches के बाहर जो है ना coelom, that is which one pseudocoelom, means the coelom is present in between the ectoderm and endoderm outside of the mesodermal pouches. तो दूसरा कैटेगरी भी ectoderm, mesoderm, endoderm लेते. इधर mesoderm and endoderm के बीच में जो cavity है, that is not original cavity, so that is only called as a pseudocoelom. Here body cavity is not lined by which one mesodermal layers. Okay, mesoderm will be not like a continuous layers. कैसे ये scattered pouches जैसा है. Example, ASCII helminthes it is. And next one, original cavity, original coelom that will be present in between the mesodermal layers. Present between the mesodermal layers. इधर observe कर सकते हैं. So this is from Annelida to Chordata. Okay, present between the mesodermal layers. Here clearly mentioned किया. So this is comparison. Acoelom, pseudocoelom and eucoelom. Acoelom में कोई space नहीं है. Okay, and pseudocoelom में space is present, but it is not lined by the mesodermal layers, and here space is lined by the mesodermal layers. Examples. This is enough. Okay. Now, coelom formation कैसे? Okay, let us see that coelom formation को. So previously मैं जो diagrams draw किया, वही diagrams इधर continue करूँगा बेटा. Okay. So here up to certain stage ये diagrams compulsory होते. Male and female gametes they are going to fuse. Fuse होने के बाद कौन सा फॉर्म होते? zygote. A process fertilization होते. So this is a 2n zygote. This zygote will be shows the divisions. 2 cell stage. Next one 4 cell stage. Next one 8 cell stage. Next one 16 cell stage. Morula. ये पूरा ऑलरेडी हमको मालूम है. 2 सेल, 4 सेल, 8, 16 एंड नेक्स्ट वन कौन सा 32 सेल स्टेज. इधर थोड़ा सा साइज इंक्रीज होगा. बाद में ये ब्लास्टुला बोलते. इधर सेल्स थोड़ा सा स्टार्ट होगा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस. देन इन्वेजिनेशन नेक्स्ट स्टेज में सेल्स वाज डिसइंटीग्रेटेड. इधर इन्वेजिनेशन होगा. इन्वेजिनेशन होने के बाद क्या होगा? दिस विल बी गोइंग टू स्टार्ट्स द इन्वेजिनेशन. इधर भी ये कौन सा ब्लास्टोफोर, ब्लास्टोमेयर्स एंड ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील ये पूरा वर्ड्स एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गया. ये प्रिमिटिव बॉडी कैविटी ब्लास्टोसील, प्रिमिटिव कैविटी बोलते ब्लास्टोसील. देन फाइनली इन्वेजिनेशन की वजह से इधर फॉर्म होते ये स्टेज. इन्वेजिनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका. बाद में इधर जो है ना ये सेल्स embryonic 4D cells will be going to formed. Okay, so next stage में हम इसको क्या करते? हम इधर एसिलोम सूडोसिलोम क्यों नहीं है, यूसिलोम में 2 टाइप्स साइजोसिलोम एंट्रोसिलोम को डिस्कस कर रहा है. तो इधर साइजोसिलोम एंड दिस इज एंटीरोसिलोम को डिस्कस कर रहा है. नाउ अभी हम लेते कौन सा? साइजोसिलोम. साइजोसिलोम में क्या होगा बोले तो इधर से डिफरेंशिएशन होते बेटा. ओके, सो इधर डिफरेंशिएशन कैसे हो गया बोले तो इधर एम्ब्रियोनिक 4D सेल्स जो है ना, डायग्राम छोटा सा हो गया. 4D एम्ब्रियोनिक सेल्स फिर भी यही ले लेंगे, इधर से स्टार्ट करने. इधर
सो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा. फ्यूज होने के बाद it will be going to forms this one endoderm and the next one is ectoderm फॉर्म हो जाएगा. बाद में बीच में ये जो है ना, these are going to grown in opposite direction pouches like structures. from this one फ्यूचर में mesoderm फॉर्म होते. so this is endoderm. बाद में ये ectoderm. ओके बाद में ये mesodermal जो layers है ना, they are going to fuses with each other and forms like a continuous layer. next stage में क्या होगा, ये जो mesodermal layer form हो गए ना next stage में, ये mesodermal, ये endoderm, ये ectoderm, इसके बीच में जो mesoderm layer है, that mesodermal layer will be undergoes the division and forms as a two layers. ये लेयर्स स्प्लिट होते, साइजो मीन्स स्प्लिटिंग. ये स्प्लिट होके क्या होगा, ये ऊपर का लेयर विल बी माइग्रेटेड एंड सेटल जस्ट बिलो विच वन, जस्ट बिलो एक्टोडर्म. ये नीचे का लेयर जो है ना, दिस विल बी गोइंग टू माइग्रेटेड, इट विल बी गोइंग टू कंट्रैक्ट एंड सेटल जस्ट अबव द विच वन, अबव द एंडोडर्म. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया बोले तो, नेक्स्ट स्टेज में इधर देख लो, ये एंडोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया. ओके नाउ इन दोनों के बीच में मेसोडर्म माइग्रेशन जो है ना, देन दिस इज गोइंग टू इनर लेयर, विजरल पेरिटोनियम हम बोला ना अभी, ये सेटल्ड अबव द एंडोडर्म एंड दूसरा जो है ना, दैट विल बी माइग्रेटेड अपवर्ड एंड इट इज जस्ट सेटल्ड बिलो द विच वन, एक्टोडर्म. अभी इन दोनों का बीच में जो कैविटी है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ ओरिजिनल सीलोम. हम डेफिनेशन भी बोला ना, तो क्या है, द ओरिजिनल बॉडी कैविटी बोले तो क्या, बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मेसोडर्मल लेयर्स आर कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर्स. सो दिस इज कॉल्ड एज साइजोशिलोमेट्स बोलते. साइजोशिलोम फॉर्मेशन बोले तो साइजो मीन्स डिवीजन. वो कौन सा डिवाइड हो रहा है इधर, मेसोडर्म. ये पूरा फॉर्म होने के बाद इट विल बी गोइंग टू डिवाइड इन स्प्लिट एंड फॉर्म्स एज ए टू लेयर्स. ये टू लेयर्स प्रीवियसली इधर देखो, इधर कैविटी है, इधर कैविटी है, मीन्स आउटसाइड ऑफ द, not in between, outside of the mesodermal layers, cavity will be present. Now that cavity will be occupied by, replaced by which one, mesodermal layers. So mesodermal layers में एक layer, ऊपर का layer ऊपर migrate होते, नीचे का layer will be going to migrate towards to endoderm. Okay, so outer layer will be migrated towards to endoderm and inner layer will be migrated towards to endoderm. They are going to settle in their concerned cases. Means इधर primitive cavity जो है ना, means cavity present outside of the mesodermal layers. Now it will be replaced by the mesodermal layers. पहले तो outside है, बाद में in between है. So this is called as साइजोशिलोम. एंटेरोसिलोम को लेने तो एंटेरोसिलोम इधर mesodermal pouches will be rises from the endoderm. इधर देखो, this is mesodermal pouches will be raised from the endodermal and they are directly connected with the archenteron, primitive gut, archenteron, enterosilomates, enteron और archenteron बोलते, primitive gut. So बाद में क्या होगा, these are going to pinched off from the endoderm. So next stage में क्या होगा, so these are going to pinched off बोले तो get separated from this one and ये endoderm form हो जाएगा, ये ectoderm already. Next this is mesodermal pouches. ये mesodermal pouches will be going to growing in opposite directions and ये opposite direction में growth होते रहते. Then finally what happens, they are going to fuse. Fuse, okay, then this is mesodermal. Now this is endoderm and this is the ectoderm. Next stage में क्या होगा, these are going to starts to migrate. ये ऊपर जाते, ये नीचे जाते. Now endoderm and this is a ectoderm. इन दोनों के बीच में ये mesoderm will be going to
migrated and settle just above the endoderm and below the which one ectoderm. So now according to the definition of original coelom, the cavity is present in between the mesodermal layers. इधर क्या हम समझना ही बोले तो इधर 4D cells से mesodermal pouches will be going to rises and they are going to fuses and split and occupies the cavity. इधर है तो endodermal layers means a endoderm will be going to gives off means mesodermal pouches will be raised from the endoderm and they are going to directly connected with which one आर्केंटिरॉन एंटेरोसिलोम से आर्केंटिरॉन से कनेक्ट होते. सो इसलिए इससे कनेक्ट होते बाद में मेसोडर्मल लेयर्स विल बी गोइंग टू दे आर गोइंग टू पिंच्ड ऑफ एंड एंडोडर्म फॉर्म हो जाएगा. बाद में एक्टोडर्म ये मेसोडर्मल पाउचेस विल बी गोइंग टू मेसोडर्म इज गोइंग टू माइग्रेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड ऑक्युपाइज द कैविटी प्रेजेंट outside of the mesodermal layers. So then now cavity is present in between the mesodermal layers. So this is one is the cytocoelom and another one is the enterocoelom. Majorly first stage इधर 4D embryonic 4D cell से form होगा. इधर which one endoderm से mesodermal pouches से rise होगा. बाद में they are connected with the archenteron. So remaining process will be same. I hope you understand this. So this is the formation of eucoelom. Original coelom. इसमें one is the cytocoelom and another one is the enterocoelom. Next. Yeah. So segmentation. So one more which one basis of classification is known as a segmentation. So ये segmentation में क्या होगा इधर observe कर लेंगे. Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least or few organs or organ systems. Then that serial repetition of body division is known as which one segmentation बोलते. Okay, in some animals the body externally इधर देखो externally ये externally कहाँ divide हो गया and there also and externally and internally इधर externally and internally it is divided into segments. ये segments इसको बोलते segment इसके बोलते segment. इसमें at least few serially repeated organs and organ systems. So बोले तो इधर coelom है, इसमें भी सीलोम होते, इसमें भी सीलोम होते. इधर डोर्सल मेसेंट्री, सो डोर्सल मेसेंट्री ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेंट्रल साइड जो ऑर्गन्स है, ब्लड वेजल्स है. सो दोज आर एटलीस्ट 100% सेम होने का जरूरत नहीं. एटलीस्ट फ्यू ऑर्गन्स विल बी गोइंग टू सीरियली रिपीटेड इन ईच एंड एवरी सेगमेंट. ओके, ईच एंड एवरी सेगमेंट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ segmentation. For example, in earthworm dimension. Earthworm. So in earthworm, body shows this pattern is called as a metameric segmentation बोलते. Metameric segmentation means in earthworm body divided into serially repeated divisions blocks जैसा. So that is called as a metameric segmentation. Not only outside but also inside. Inside भी divide होते and inside each and every segment में serially repeated at least few organs are present. That is that phenomenon pattern. That pattern is called as a metameric segmentation and the phenomenon is known as ये process that is called as a metamerism बोलते. Metamerism. So first of all we have to remember that understand that what is segments, what is septa. Septa इधर mention किया देखो, septa बोलते. So now we are going to observe this one with rough diagram already is there. So now we can observe that either ridges and grooves are present. ये groove इधर, ये इधर. So it is indicates which one something will be inside going to divided. So inside divided बोल के इधर inside divide नहीं होने तो that is not original segmentation, that is pseudo segmentation metamerism बोलते. इधर original segmentation बोले तो it is not only outside but also inside also divided as a compartment. इधर है तो ये first compartment, second compartment, third compartment. ये first compartment में कौन सा है, second compartment में वैसा है. So इधर P just for our understanding Q R S T
U V. These are organs. Either be P Q R T U V. इधर S मिस हो गया, बोले तो एटलीस्ट फ्यू विल बी गोइंग टू. देन हियर आल्सो P Q R U V. इधर एक मिस हो गया. सो वैसा एटलीस्ट फ्यू ऑर्गन्स सीरियली रिपीट हो गया. नॉट ओनली एक्सटर्नली इट इज indicates that there is a division, internally also divide, and these organs present in first segment उसमें at least few organs repeated, at least few organs repeated. This process is known as a segmentation. ये segmentation में this is the wall which is going to divides the neighboring compartments. ये compartment को बोलते, ये compartment को बोलते which one? This is a segment. segment. ये भी segment है, ये भी segment है. ये segments के बीच में जो wall है, this is called as a septa. septa बोलते, septa. So the arrangement of repeated arrangement here it is segment to septa, segment to septa, segment to septa. ये division हमेशा होते रहते. segmentation, वो segmentation में not only outside, inside also organs ये divisions compulsory होते. Okay, इधर groove wise it is indicates something will be divided here. So it is divided exactly. Here also divided exactly. So here also it is going to divided exactly. Means not only outside, inside also it is divided. Then it is called as a metameric segmentation. So outside only division is indicated, inside division nahi to, that is called as a pseudo metamerism or pseudo metameric segmentation बोलते. So वो pseudo metamerism will be observed in which one? Flat forms, Taenia, Solium, वैसा organisms में. ये original metamerism, true metamerism. So metameric segmentation will be observed in which one? Annelids, arthropods body also, in our body also, abdominal segments and bicep tricep arrangement of muscles and spinal nerves, cranial nerves. Okay, so and even though blood vessels का arrangement arteries veins per order में होते. So this is indicates that segmentation or metamerism. Okay, now next one, notocard. One of the basis of classification, notocard. Okay, so notocard बोले तो क्या है? Notocard means it is a cord means rod-like structure is present in the organisms. इधर देखो, ये notocard है, बाद में उसके ऊपर नर्व कार्ड है. ये notocard है, ये नर्व कार्ड. ये देखो ब्लैक कलर जो है ना, that is a नर्व कार्ड. नर्व कार्ड के बीच में cavity is present. बोले तो nerve cord is tubular, notocard is not tubular, it is a rod like structure. Notocard ये जो है ना, ये पूरा inside cavity will be not present. पूरा it is filled with something. It is bony structure, it is rod like structure. कुछ organisms में ये bony नहीं होते, that is made up of which one? Cartilage भी हो सकते, cartilaginous structure. So whatever it may be, this is not hollow, it is contains some matter. So this is known as rod like structure just below the which one? Nerve cord. So this is called as a notocard. Okay, this is present at the back side of the organism. This will be provides the stiffness, rigidity to the organism, even locomotion may be help करते. Okay, so that is called as a notocard. इधर क्या mention किया? Notocard is mesodermally originated. Important बेटा. Okay, mesodermally originated or derived rod-like structure. Rod का tube का क्या difference क्या है बोले तो this is a tube and this is the rod. ये rod है. Means inside of this one the content will be present. Okay, so inside of which one content is not present, vacuum is present, that is called as a tube. ये tube बोलते and this is a rod बोलते. So this is a nerve cord, neural tube बोलते. ये notocard, rod like structure it is. Okay, formed on the dorsal side of the organism. Which side? Dorsal side or ventral side बोले तो dorsal side only it is, just below the nerve cord it is. During the embryonic development in some animals. So कुछ organisms में ये throughout life will be present and कुछ organisms में ये embryonic development में होते, बाद में it is replaced by the which one? Vertebral column. इसलिए उसको बोलते हैं vertebrates it is. Vertebral column is came from this notocard only. Okay, so now notocard is a rod-like structure which is made up of mesoderm. हम अभी देखा ना endoderm
एंड मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स सिस्टम्स फॉर्म होगा, मीसोडर्म से कुछ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल दिस नोटोकॉर्ड, एंड एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन्स सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इससे फॉर्म होते। सो दिस इज mesodermal originated rod like structure, and it is present at the dorsal side during embryonic development of some organisms like human beings। embryonic development में हम ये नोटोकॉर्ड है, बाद में when it is becomes like a baby, then this notochord is replaced by the vertebral column, bony bits जैसा फॉर्म होगा। ओके, सो दिस इज नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के हिसाब से भी ऑर्गेनिजम्स को कौन सा, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्डेट्स, एंड जो ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है दोज आर कॉल्ड एज अ नॉन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट वन, ये नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में नहीं दे दिया, जस्ट फॉर अवर पर्पस ओनली। ये नोटोकॉर्ड ब्लैक स्ट्रक्चर इट इज। सो इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो आउटर मोस्ट कौन सा इलास्टिक शीट इज प्रेजेंट, रिजिड इट इज। उसके नीचे सेकंड लेयर फाइबरस शीट इज प्रेजेंट, एंड उसके नीचे में मीन्स बीच में एग्जैक्टली कौन सा फ्लूइड फिल्ड सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज वैक्यूलेटेड सेल्स, vacuolated cells are present. So from this notocard only vertebral column फॉर्म हो गया। उसका एविडेंस क्या है बोले तो साइंटिस्ट दे आर गोइंग टू शोइंग दैट ये फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग दिस इज कौन सा एक वर्टिब्रल कॉलम में ये एक वर्टिब्रे, ये दूसरा वर्टिब्रे, ये तीसरा वर्टिब्रे, ऐसा वर्टिब्रे बोन्स आर अरेंज्ड बिट्स लाइक ए कॉलम। सो इसके बीच में जो टिश्यू होते इधर शॉक अब्जॉर्बर like structure will be, this is called as intervertebral disc। ये intervertebral disc में जेल लाइक टिश्यू will be present। इसको ये intervertebral disc को केमिकली हम एनालिसिस करने तो लैबोरेटरी में ये वैक्यूलेटेड सेल्स में जो है सेम कॉम्पोनेशंस will be present, same tissue will be present in this intervertebral disc बोलते। okay, so that's why we are believing that this notocard only the foundation step for the which one vertebral column। okay, so the organisms which contains the vertebral column, okay, those are called as vertebrates। those organisms does not contains the vertebral column, those are called as a non chordates or invertebrates बोलते, invertebrates। okay, यही मेंशन किया। एनिमल्स विथ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड है तो उसको कार्डेट्स बोलते, एंड द एनिमल्स which do not form this structure called as a non chordates। ऐसा एनिमल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence of नोटोकार्ड। ओके, सो एनिमल्स को लेने तो बेस्ड ऑन कौन सा नोटोकार्ड, they are, notocard is present, एक मिनट, notocard is present, then those are called as a chordates। notocard is absent, those organisms are called as a non chordates बोलते हैं। So this is a classification and examples from Porifera to Echinodermata mention किया NCERT में, but we can take that hemichordata also, which one ये ओके, उसमें नोटोकार्ड इज नॉट प्रेजेंट। ऑफ कोर्स हम एक क्लासेस में इन डिटेल डिस्कस करने तो इसमें नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोमोकार्ड इज प्रेजेंट। ओके, सो this is also invertebrate only। First of all, scientists they are considered that it is not invertebrate non-chordate, is chordate जैसा consider किया। बाद में उनको पता चला गया तो that is not original notocard, it is a stomocard, duplicate जैसा, इसलिए उसको chordate से निकाल के non-chordates में last phylum जैसा रख दिया। Okay, so if instead of which one Echinodermata नहीं दे दिया, directly hemichordata दे दिया, विथ वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ नोटोकार्ड एंड ब्रेन। ओके, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन हमको कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ब्रीफ आइडिया दे रहा है मैंने। ओके, सपोर्टिंग होते। सो प्रीवियसली हम देखा कौन सा पूरा कार्डेट का डायग्राम को मैं ड्रा कर रहा है इधर। सो दिस इज एक कार्डेट का आउटलाइन। तो इधर
इसके जस्ट एक्टोडर्म के मीन्स बॉडी वॉल के नीचे दिस इज कौन सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अभी देखा ना बेटा डायग्राम में, सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली कौन सा नर्व कॉर्ड और ट्यूब. नेक्स्ट इसके जस्ट बिलो दैट विच वन इज प्रेजेंट, दिस इज ओनली नोटोकार्ड. ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इधर पूरा कंटेंट ही होते रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना. सो दिस इज ये पूरा ये नोटोकार्ड बेटा. नाउ ठीक है मैं लिखूंगा नोटोकार्ड. अभी मैं ये नर्व कार्ड नोटोकार्ड को बाहर ले रहा है, बाहर लेके ड्रा करने. तो एवोल्यूशन में क्या हो गया, ब्रेन कैसे स्पाइनल कार्ड कैसे फॉर्म हो गया बोले तो ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर रीजन लेने. तो ये एंटीरियर रीजन ऑफ नर्व कार्ड विल बी एनलार्जेस ग्रेजुअली इन द एवोल्यूशन एंड रिमेनिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट इज नॉट एनलार्जेस, वैसे है. सो बाद में क्या हो गया फर्दरली एवोल्यूशन में बोले तो साइमल्टेनियसली व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो टोटली थोड़ा सा एनलार्ज होने का कोशिश किया नोटोकार्ड आल्सो. साइमल्टेनियस एवोल्यूशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द डिमांड. बाय दैट फाइनली ए न्यू स्पीसीज फॉर्म होगा, दैट इज ओनली एवोल्यूशन बोलते. नाउ नेक्स्ट स्टेज में हम ऑब्जर्व किया तो द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस नर्व कार्ड इज बिकम्स लाइक enlarged structure, remaining a tail like structure form हो गया. So then this enlarged structure only nowadays we are going to say that is a brain and remaining brain, ये brain का extension that is only nothing but which one, spinal cord बोलते, spinal cord it is. Next वो evolution हो रहा है कौन सा, ये nerve cord ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जैसा. एट द सेम टाइम ये एंटीरियर पार्ट ऑफ विच वन नोटोकार्ड आल्सो बिकम्स फ्लैट एंड इट इज गोइंग टू सराउंड्स द ब्रेन एंड फॉर्म्स एज ए विच वन क्रेनियम को फॉर्म किया क्योंकि ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है उसका. रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम्स लाइक स्पाइनल कार्ड है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इट विल बी मीन्स रिमाइनिंग पार्ट ऑफ नोटोकार्ड फॉर्म्स लाइक ए बिट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़्यादा बिट्स जैसा फॉर्म हो गया. देन दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ वर्टिब्रे पूरा फॉर्म्स एज ए कॉलम दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम. सो जो ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम है कंपल्सरी दे हैव क्रेनियम, जो ऑर्गेनिजम्स में क्रेनियम है उसको वर्टिब्रल कॉलम कंपल्सरी होगा. ओके, सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ नोटोकार्ड एज cranium and vertebral column, and evolution of nerve cord as a brain and spinal cord. Brief idea. Okay, I hope you understand this one. Yes. So finally, under this basis of classification animal kingdom में, so अभी तक हम जो डिस्कस किया levels of organization and symmetry, body cavity or coelom, so ये तीन basic characters से organisms को, okay, our remaining characters also, but measure these characters, okay, according to NCERT, पूरा animal kingdom को divided into various groups, that is the phylums based on these characters, that is levels of organization. Next one is symmetry, and next one is coelom, body cavity. Okay, so first of all, kingdom Animalia, multicellular organisms, that is metazoa बोलते, metazoa एनिमल किंगडम, मेटाफाइटा प्लांट किंगडम. ये मेटाजोवा को इधर मेंशन नहीं किया, एक्चुअली मेटाजोवा को टू सब किंगडम्स जैसा डिवाइड किया. वन इज पैराजोवा एंड अनदर वन इज यू मेटाजोवा. पैराजोवा के अंदर पोरिफेरेंस जैसा हम पहले आइडेंटिफाई किया ना, दीज आर नॉट लाइक ए ओरिजिनल एनिमल्स, लाइक ओके पैरेलल एनिमल्स, डुप्लीकेट एनिमल्स. पैराजोवा को रख दिया अंदर सब किंगडम
पैराजोवा को अंदर पोरिफेरेंस पैरेलल एनिमल्स। नेक्स्ट वन, ये मेटाजोवा के अंदर दूसरा सब किंगडम कौन सा होते हैं? ओरिजिनल एनिमल्स दो सर, यू मेटाजोवा। सो मेटाजोवा डिवाइड्स एज अ पैराजोवा एंड यू मेटाजोवा। यू मेटाजोवा बोले तो ओरिजिनल एनिमल्स, पैराजोवा बोले तो दे कंटेन्स दी ओनली सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री एसिमेट्रिकल दोज आर एंड बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। सो ये कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फाइलम पोरिफेरा के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ये हम इधर से उधर पढ़ने तो हमको शायद समझ में नहीं आ सकते, लेकिन रिवर्स में पढ़ने तो फाइलम पोरिफेरा डज नॉट कंटेन्स द बॉडी कैविटी एंड दे डजंट कंटेन्स द सिमेट्री एसिमेट्रिकल एंड दे कंटेन्स द सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमको पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यही हम एग्जांपल ले लिया ना। सो नेक्स्ट वन इज देयर अगेन, एनिमल्स को ये सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, पैराजोवा इट इज नॉट ओरिजिनल एनिमल्स। ओरिजिनल एनिमल्स में लेने तो दे एग्जिबिट्स द टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनिजम्स को ओके, सो बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री, इधर सिमेट्री अपडेट हो गया। सो फर्स्ट वन, इधर ये पोरिफेरेंस में सिमेट्री नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फाइलम्स दैट इज सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में कौन सा? रेडियल सिमेट्री वी कैन ऑब्जर्व दैट। रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसा बोल के ऑल रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक और ऑल डिप्लोब्लास्टिक आर रेडियल सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि बोले तो नाइडेरिया टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्रिकल, बट अबाउट विच वन इकोनोडर्मेटा that is also radial symmetry, pentamerous radial symmetry हम देखा ना। so इकोनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। okay, so it is not applicable, which one all word हम use नहीं कर सकते, some exemptions will be there। so here फिर भी कौन सा एक कैरेक्टर अपडेट नहीं हुआ, that is बॉडी कैविटी इधर नहीं है, एसिलोमेट्स ओनली। so सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया टिनोफोरन्स में बॉडी कैविटी is absent, but they are diploblastic and exhibits the radial symmetry. They shows the which one? Tissue level of organization. These are the first eumetazoan phylum is Coelenterata nidaria. First metazoan phylum कौन सा? First metazoan phylum porifera. First eumetazoan का है तो nidaria आते। Okay, next रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स में अपडेटिंग ऐसा है। सो रेडियल सिमेट्री हो गए ना, डिप्लोब्लास्टिक हो गए ना, ऑर्गेनिजम्स आर अपडेटेड एज विच वन? बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इधर बायलैटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक, इधर मेसोडर्म एब्सेंट है, इधर मेसोडर्म प्रेजेंट है। ओके, नाउ ये ऑर्गेनिजम्स में फिर भी फाइलम कौन सा? प्लाटीहेलमिंथिस। प्लाटीहेलमिंथिस में कौन सा? टिश्यू नहीं है, ऑर्गन लेवल है, लेकिन इसमें फिर भी सीलोम अपडेट कैरेक्टर नहीं हुआ, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री है तो अपडेट हो गया। ओके, तो दे आर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, बट इसमें सीलोम कंप्लीटली अपडेट नहीं हुआ, बट अपडेटेड थिंग इज bilateral symmetry, triploblastic and organ level of organization। नेक्स्ट फाइलम में कौन सा? आस्किएलमिंथिस। इधर अपडेट हो गया सीलोम, दैट इज नॉट ओरिजिनल सीलोम, ट्रू सीलोम नहीं होते, दैट इज सूडो सीलोम इज प्रेजेंट। इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, these are ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इट इज, बट हियर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अपडेटेड। एंड नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल सीलोमेट्स। ओरिजिनल सीलोमेट्स में अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकाडेटा, कॉर्डेटा। सो इधर हमको मालूम है अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, these are the schizophylomates and remaining are enterocoelomates, enterocoelomates होते हैं। ओके, सो दिस इज टोटल एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम एंड नेक्स्ट वन सेगमेंटेशन, नोटोकार्ड, ये पूरा ओके मेजरली यही होते हैं। ओके, नाउ मैक्सिमम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बेटा। अभी हमको जितना समझ में आ गया उसको चेक करने के लिए क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, ओके, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस देखने। तो सो फर्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लिया हमने। इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, क्यों मैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लिया? डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन ले सकते बोले तो हमको सिंपल कॉम्प्लेक्स वैसा नहीं, प्रेजेंट क्वेश्चन पेपर ट्रेंड कैसे वो ऑब्जर्व करना है। सो अभी क्वेश्चन पेपर में 10 to 12 और 15 तक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली। 45 क्वेश्चंस में 1/3 मॉडल इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली, नियरली 1/3 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली, इसलिए मैं मैच द फॉलोइंग ले लिया डायरेक्टली। ओके, सो नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो विल बी देयर। मैच द फॉलोइंग हमको लोअर क्लासेस में भी है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
cellular level of organization, and next one tissue level of organization, organ system level of organization. So पहले हम levels of organization में पूरा देखा ना इधर, वो उसके एक क्वेश्चन फॉर्म किया. So organ level of organization किस में देखते हैं बेटा? organ level में, organ level of organization. Okay, so that is organ level of organization will be observed in the platyhelminthes. So that is nothing but a fourth one. Next one, cellular level of organization, cellular aggregation, cellular level of organization कौन सा? Poriferans में 3. Okay, A4 B3 कौन सा है? A4 and B3. So this is the fourth option. So remaining options को मैच करने का जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट ज्यादा होते हैं इधर, ऐसा ही मैच कर. लेट अस डिस्कस दैट, रिमेनिंग आल्सो फुलफिल कर लेंगे. ऐसा है तो हम एग्जाम में करना ही पड़ता. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? नाइडेरिया. नेक्स्ट वन, ये 3 मैच करने तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा मैच करने का जरूरत नहीं, इधर 4 है. फिफ्थ ऑप्शन है तो हम देखना ही पड़ता फिर भी. सो देन A4 B3 C2 D1 4 3 2 1. ओके, सो रिवर्स में दे दिया इधर का. ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा? फोर्थ ऑप्शन को हम बबल करना ही पड़ता. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को गेस करो. जितना फास्ट नहीं बोले तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप ऑप्शन बोलना ही पड़ता, करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट अस सी दैट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट बॉडी सिमेट्री शोन इन द डायग्राम. ये दोनों डायग्राम्स दे दिया, उसमें करेक्ट बॉडी सिमेट्री को, करेक्ट सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है. ये कौन सा? हाइड्रा बिलोंग्स टू विच वन? नाइडेरिया में कौन सा सिमेट्री होते? रेडियल सिमेट्री. ये कौन सा एंगल में भी डिवाइड करने तो ये रेडियल सिमेट्री. सो देन ये रेडियल सिमेट्री. बी है तो ओनली वन एंगल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, ये इसका कौन सा? ये क्रैब है. ओके, सो दिस इज ओनली वन एंगल में बोले तो कौन सा सिमेट्री? दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इधर, पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दी पढ़ना ही, फटाफट आंसर बोलना ही. नाउ चूज द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मेंशन किया, एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम होते, वो लोग डायरेक्टली करेक्ट ऐसा कम देते, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, नॉट करेक्ट वैसा देखते. क्योंकि एग्जाम में तो हम पढ़ते इधर इनकरेक्ट, बट लेकिन ऑप्शंस में ढूंढते करेक्ट के लिए. ओके, सो वैसा नहीं होते. इनकरेक्ट मैच इट इज. सीलेंटरेट्स रेडियल सिमेट्री, ये करेक्ट है. एकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री, ऑफ कोर्स पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री, स्टारफिश and platyhelminthes triploblastic, correct है. and trinophorans are not triploblastic, those are diploblastic है. so ये ऑप्शन गलत है. so this is only हमारा करेक्ट ऑप्शन होते, क्योंकि इधर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा ना. so करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन होगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, छोटा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बोलना है बेटा. यस, नाउ द लेयर absent in the embryos of diploblastic animals. okay, so layer absent in the diploblastic organisms. okay, so diploblastic organisms में कौन सा होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक में आउटसाइड एक्टोडर्म एंड इनसाइड कौन सा बेटा? एंडोडर्म. कौन सा नहीं होते? इधर मीसोडर्म नहीं होते, मीसोडर्म इज एब्सेंट. ये दोनों प्रेजेंट है, वही पूछा. सो मीसोडर्म इज एब्सेंट. इधर एक्टोडर्म, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं. एंडोडर्म करेक्ट ऑप्शन नहीं. यस, मीसोडर्म, दिस इज ओनली करेक्ट ऑप्शन. ओके, मीसोग्लिया वो कनेक्टिव टिश्यू जैसा जेल लाइक टिश्यू इट इज, उसको छोड़ दो, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया. सो मीसोडर्म इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ट्रू सीलोम appear in which of the following during evolution mention किया. ओके, सो ट्रू सीलोम, नाइडेरिया में कोई सीलोम नहीं होते, एनिलेडा में ट्रू सीलोम है. नेक्स्ट वन इज प्लाटीहेल्मिंथिस में नहीं है ट्रू सीलोम, आस्केहेल्मिंथिस में भी ट्रू सीलोम नहीं है, वो सूडो सीलोम है. नाउ करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन. ओके, नाउ वी कैन सी दैट नेक्स्ट वन. यस, read the question. In some animals or animal groups, the body is found divided into compartments, that is nothing but segments, septa divide discuss किया ना हमने, with at least some
organs repeated. Okay, so this character feature is called as क्या बोलते बेटा इसको segmentation, ये करेक्ट है. नेक्स्ट वन मेटास्टासिस, ये अलग है, वो कैंसर के लिए ये वर्ड आते. नेक्स्ट वन मेटाजेनेसिस, ये नाइडेरियन के लिए पॉलिप मेडुसा मेडुसा पॉलिप रिप्रोडक्शन मेथड है. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है. मेटामार्फोसिस बोले तो डेवलपमेंट के लिए ओके यूज करते. नाउ करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन ओनली. ओके, नाउ बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया. थैंक्स फॉर योर पेशेंस. थैंक यू. We will meet again in next class, next topic. Okay.